दृष्टि हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ी थी, पेज नंबर 93 पे आ गए हम लोग। तो 93 से हम लोग इसकी क्विक रीडिंग शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कि आज 1 आवर का कंप्लीट डेटा स्ट्रेच वीडियो कम बना लें। सो लेट्स स्टार्ट। Recently, the scheme for the remission of the duties and taxes on the export duties. The remission of duties and taxes on export duties support which was notified till 30 September, which now naturally 30 June 2024 at the same date. Remission of duties and taxes on export products has been introduced by the Government of India making amendment in Foreign Trade Policy 2015 से 20 in the year 2000. This scheme has provides for rebate of all Indian central, state and local duties taxes levied on the goods exported which have not been refunded under any other existing scheme. Remission of duties and taxes on exported products scheme have been made effective from the export from 8 January 2021. National Turmeric Board on 4 October 2023, Government of India notified the constitution of the National Turmeric Board. The National Turmeric Board will focus on the development and growth of turmeric and turmeric products in the country. The board shall have a chairperson to be appointed. The board shall have a chairperson to be appointed by the central government. Turmeric production in India. India is the largest producer, consumer and exporter of turmeric product in the world. In the year 2005, the area of 3.24 lakh was under the turmeric cultivation in India with a production of 11.61 lakh tons. Just wait a second. Okay, now let's National Turmeric Board on 4 October 2023, the Government of India notified the constitution of the National Turmeric Board. 4 October 2023 को बना था. National Turmeric Board will focus on development, growth of the turmeric and the turmeric products in the country. The board shall have a chairperson to be appointed by the central. इसके जो chairperson है वो central government appoint करेंगे. Turmeric production in India. India the largest producer पर भी है, consumer भी exporter of turmeric in the world. In the year 2022, the area of 3.24 lakh hectare was cultivated in India with a population of 11.61 lakh tons. Over 75% of global turmeric production, 75%. More than 30 varieties of turmeric are grown in India. It is grown in 20 states in the country. The largest producer state of turmeric आता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के बाद तेल कर्नाटक एंड तमिलनाडु. महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक पे तमिलनाडु. रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट ने 18 अक्टूबर 2023 कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयरपर्सन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी has approved the project on the green energy corridor phase 2 interstate transmission system. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इंटरस्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम for 13 gigawatt renewable energy potential. The Prime Minister during Independence Day speech on 15 August 2023 announced the setting of 7.5 gigawatt solar park in after extensive field survey. Minister of New Renewable Energy prepared a plan to set up 13 gigawatt or renewable energy generation capacity along with 12 gigawatt hour battery energy storage system in Pang Valley in Ladakh. The project is expected to be set in financial 29 से 30. The total estimated cost of it is 20,000 crore and central financial assistance at 40% of the project cost to be 8,300 crore. The Power Grid Corporation of India will be the implementing agency. The transmission line for evacuating this power will pass through the Himachal Pradesh and Punjab up to the Kaithal in Haryana. हिमाचल प्रदेश में भी है, पंजाब में भी कैथल इन हरियाणा. वेट विल बी इंटीग्रेटेड विद नेशनल ग्रिड. द प्रोजेक्ट विल एंटर द सेटिंग ऑफ 713 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन इन जिसमें 480 किलोमीटर हाई वोल्टेज डायरेक्ट डीसी line and 5 gigawatt capacity high voltage DC terminal each at Pang Valley in Ladakh and Kaithal in Haryana. This project in addition to interstate transmission green energy corridor which is already under implementation in the state of Gujarat, Karnataka, Kerala, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh for grid integration and power evacuation. Interstate transmission system GEC2 is expected to be completed by 2030. India's first regional rapid transit system. Recently, the Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the priority sector of Delhi Ghaziabad Meerut regional rapid transit system. Delhi से गाजियाबाद मेरठ regional rapid transit. The Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the priority section of Delhi Ghaziabad Meerut regional rapid transit system corridor. Delhi Ghaziabad Meerut at Saibabad Rapid Extension Ghaziabad, Uttar Pradesh. Recently, the Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the priority section of Delhi Ghaziabad Meerut. Recently, the Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the priority sections of Delhi Ghaziabad Meerut. नरेंद्र मोदी ने किया दिल्ली से गाजियाबाद से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एट साहिबाबाद रैपिड स्टेशन इन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश.
नेक्स्ट टॉपिक अबाउट इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की 20 अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया था। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्लैग्ड ऑफ द रैपिड एक्सचेंज कनेक्टिंग सैयदाबाद टू दुबई depot, making the launch of the regional rapid transit system सैयदाबाद टू दुबई। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 17 किलोमीटर की प्रायोरिटी सेक्शन ऑफ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर विल कनेक्ट सैयदाबाद टू दुबई डिपो विद स्टेशन एट गाजियाबाद में होगा, गुलधर में और दुबई में। द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर वाज implemented in 2019. The regional rapid transit system is new rail-based semi-high-speed high-frequency commuter transit system with design speed of 180 km per hour. Regional rapid transit is transformational regional development initiative is designed to provide the high-speed train for the intercity commuting every 15 minutes, which can go up to a frequency of every 5 minutes as per requirement. A total of 8 regional rapid transit system corridors have been identified to be located in India. Out of the 3 corridors have been prioritized to be implemented in phase 1, including Delhi Ghaziabad Meerut corridor, Delhi Gurugram, Delhi Ghaziabad Meerut, Delhi Gurugram SNB Alwar corridor, Delhi Panipat. The Delhi Ghaziabad Meerut regional being developed at a cost of more than rupees 3,000 crore will connect Delhi से Meerut in less than an hour. आधे घंटे में ऑफ ट्रैवल टाइम दिल्ली से मेरठ आधे घंटे में ट्रैवल टाइम गोइंग टू द अर्बन सेंटर ऑफ गाजियाबाद मुरादाबाद मोदी नगर। और कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ उज्ज्वला योजना। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उज्ज्वला स्कीम 13 सितंबर 2023। यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्कीम जो है 2016 में लॉन्च हुई थी। द एक्सटेंशन वाज अप्रूव फॉर द रिलीज ऑफ 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन ओवर द 3 years from financial year 3 सभी प्रोविजन 75 additional उज्ज्वला कनेक्शन विल टेक टोटल नंबर ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरी 10.34। दिव्य कला मेला। रिसेंटली द दिव्य कला मेला was organized in वाराणसी। दिव्य कला मेला was organized in वाराणसी उत्तर प्रदेश। द दिव्य कला मेला was organized to showcasing the products and skills of the person with disabilities। about दिव्य कला मेला सितंबर 15 से 24 सितंबर 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद दिव्यांग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नेशनल डिसेबल्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दिव्य कला मेला ये एक यूनिक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट person with disabilities towards the economic empowerment of the person with दिव्यांग। दिव्य कला मेला वाराणसी is the 7th one in the series starting from 2005। दिल्ली में दिसंबर मुंबई भोपाल सबसे पहले वाराणसी। दिव्य कला वाराणसी 7th one in the series starting from 2005। सबसे पहले दिल्ली से शुरू हुआ दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला was organized to showcase the products and skills of person with disabilities। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, वाराणसी। यशोभूमि। Recently, the Prime Minister of India inaugurated the phase 1 of the India International Convention and Expo Center. India International Convention and Expo Center called यशोभूमि at Dwarka in New Delhi. Inaugurated on 17 September 2023, the Prime Minister Narendra Modi. यशोभूमि is developed at a cost of around 5,400 crore and total project area of over 8.9 lakh. यशोभूमि will be among the world's largest MICE meeting, incentive conferences and exhibition. Recently, Narendra Modi has inaugurated the phase 1 of the Indian International Convention and the Expo Center called यशोभूमि at द्वारका में न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर के यशोभूमि ये 5,400 करोड़ बनी। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ओवर 8.9 लाख का। यशोभूमि विल द पूरे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मीटिंग होगी, इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन। द एग्जीबिशन हॉल विल टेक अक्रॉस 1.0 लाख meters hall will be utilized for hosting exhibitions, होंगे trade fairs and business event। यशोभूमि have been designed in such a way that it represents the continuity with convention centers outdoor space। It is made up of materials and objects inspired from the Indian culture in the form of terrazzo floors from brass inlay। terrazzo floors कैसे बने? terrazzo floors representing rangoli pattern, suspended sound absorbing metal cylinders and lit up patterned wall। यशोभूमि is equipped with a state-of-the-art wastewater treatment system with underpressure wastewater reuse and provision of rainwater harvesting। The campus has been received the platinum certification for Indian Green Building Council। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इज इंडिया का प्रीमियर सर्टिफिकेशन बॉडी हेडक्वार्टर एट हैदराबाद। आईजीबीसी द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। पूरे वर्ल्ड का जो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का फाउंडिंग मेंबर है। और डिस्कसिंग ग्लोबल इशूज एट द कॉप एंड सिम्बल ग्लोबल प्लेटफॉर्म। पीएम विश्वकर्मा अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम द आर्टिजन्स एंड द पर्सन विल बी प्रोवाइडेड रिकॉग्निशन थ्रू द पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड विल प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट अप टू ₹1 lakh फर्स्ट ट्रांच ₹2 lakh सेकंड टाइम विद कंसिडर इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। द स्कीम प्रोवाइड सपोर्ट टू आर्टिजन एंड क्राफ्ट पीपल इन अर्बन एरियाज अक्रॉस इंडिया। 80 in traditional trades will be covered under the first installment under PM 18 traditional trade। विवाद से विश्वास टू अगर 2023 डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्कीम टू सेटल कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वेयर इन द आर्बिट्रल अवार्ड इज अंडर चैलेंज इन अ कोर्ट। विवाद से विश्वास टू सेटल कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। विवाद से विश्वास scheme was launched on 7 February। The scheme was announced in the Union Budget 2023 by the Union Finance Minister। The scheme will play all domestic contractual disputes where
One of the parties is either the Government of India or an organization working under its control. The scheme will cover all disputes with the central government agency, including the autonomous bodies, public sector bank, financial institutions, central public sector firm, UT, and the National Capital Authority, along with their respective Indian government e-marketplace has developed a dedicated web page for implementation of the scheme. PM Swanidhi scheme. Recently, the Union Housing and the Urban Affairs Ministry has set a new target for its loan scheme. For street vendors, 63 lakh new loans. PM Swanidhi. Recently, the Union Housing and the Urban Affairs Ministry has set a new target for its loan scheme for street vendors, 63 new lakh loan. About Prime Minister Street Vendor Atmanirbhar PM स्वनिधि स्कीम 1 जून 2023 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेंटर सेक्टर स्कीम है स्टेट वेंडर हॉकर्स वेंडिंग इन अर्बन एरिया एज ऑन बिफोर 24 मार्च 2023 द स्कीम है द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव द फैसिलिटेट द कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन अप टू ₹10,000 फॉर 1 ईयर टेन्योर विद इनहैंस्ड लोन और ₹20,000 to ₹50,000 in the second and third tranche respectively and repayment of earlier loan. Union Housing Minister for street vendors PM स्वनिधि incentivizing regular repayment 10,000 20,000 50,000 regular repayment through interest subsidy 7% पर report digital transaction by way of cash back up to 1,200 per year. While the cabinet extended the scheme's lending period until December 2023, these target are till December 2023. The credit guarantee scheme for the livestock sector. Recently in July, the Ministry of Fisheries and Animal Husbandry and Dairying has launched the credit guarantee scheme for the livestock sector. It will reboot the rural economy by leveraging MSME. Reboot rural economy by leveraging MSME. The scheme is implemented under the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund to strengthen credit delivery system, to facilitate smooth flow of credit, strengthen credit delivery system, and smooth flow of the credit to MSME. Credit guarantee for livestock sector. Reboot rural economy by leveraging MSME in livestock sector without the hassles of collateral security. Department of Animal Husbandry and Dairying has established a credit guarantee fund trust of ₹750 crore, which will provide credit guarantee coverage up to 25% of cash which is extended to MSME by the eligible lending institution. The credit guarantee scheme facilitates access to finance for unserved and underserved livestock sector. The Department of Animal Husbandry and Dairying has formed a trust with Nav Sanrakshan Trustee Company Private Limited and a wholly owned subsidiary of NABARD for the establishment of the credit guarantee. A fund trust for extending the credit guarantee to MSME under the AHIDF स्कीम. महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम 2023-24 के बजट में 31 मार्च 2023-24 के बजट में आया था. 31 मार्च 2023 ऑपरेशन सिंस अप्रैल 2023 डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आता है. For women, the objective scheme is to empower women, promote their financial independence. The scheme provides attractive and secure investment option to all girls, and when account can be opened under the scheme on or before 31 March 2025 for a tenure of 2 years. Minimum ₹1,000 any sum in multiple of 100 may be deposited within the maximum limit of ₹2 lakh. Maturity of the investment in the scheme is 2 years from the date of opening of the account under the scheme. 3 centers of excellence for the horticulture crops approved under the Mission for Integrated Development of Horticulture. The Ministry of Agriculture Pharmaceutical has approved 3 new centers of excellence for horticulture crop. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has approved 49 centers of excellence till now, out of which following 3 centers of excellence has been approved on 3 March. Center of Excellence for Kamlam Dragon Fruit by Indian Institute of Horticulture Research बेंगलुरु कर्नाटका ऑन एक्ट एज एक्सपेरिमेंटल स्टेशन. एक कमलम हो गया. कमलम क्या है? ड्रैगन फ्रूट. ओके. कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटका में एक्सपेरिमेंटल स्टेशन. बेंगलुरु कर्नाटका में हिरेहली. मैंगो और वेजिटेबल्स अंडर द इंडो इसराइल मैंगो और वेजिटेबल इंडो इसराइल एक्शन प्लान एट पानी कोयली जयपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा. उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है जजपुर में पनी कोयली, वहाँ पे हुआ है. सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, यहाँ पर भी इंडो इसराइल एक्शन प्लान है. गवर्नमेंट एक्टिविटी यहाँ पे कहाँ है? ये है गोवा में. कहाँ पे? साउथ गोवा में कहाँ पे? पोंडा खंडेपार सोडर. स्वायत्त इनिशिएटिव इन मार्च 2023 गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस commit the success of Swayat, an initiative to promote startup, women and youth advantage through government e-transaction on government e-marketplace. An initiative to promote startup, women and youth advantage through e-transaction. Startup, women and youth advantage through e-transaction on government e-market was first launched in February 2019. The intent of Swayat 2019 was to promote inclusiveness of various category of sellers and service providers on the portal of government e-marketplace. The initiative was launched in August 2016 by the Ministry of Itna. Like startup Swayat, startup women and youth advantage through e-transaction.
PM Mitra Park. The Prime Minister Narendra Modi announced on 17 March 2023 PM Mitra, a mega textile park, will set up in Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh. Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. These parks are inspired by the Prime Minister Narendra Modi 5 vision, which aim to boost the Indian textile industry from farm to fashion to foreign market. The PM Mitra scheme was announced on October 2021 and the parks are expected to be set up by 2026 से 27 with a total outlay of rupees 4,5 crore. About PM Mitra Park scheme, a park will be developed by a special purpose vehicle which will be owned by the central and the state government and in a PPP mode. PM Mitra नरेंद्र मोदी अनाउंस 17 में PM Mitra मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु तेलंगाना यहाँ पर देखो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, बीच में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 हैं 7. These parks were inspired by PM Modi 5 vision which aim to boost the Indian from farm to fashion to foreign market, from industry, from farm to fashion to foreign market. 5 year PM Mitra scheme was announced in 2021 में इन्होंने अनाउंस किया था and announced in 2023 and the parks are expected to be set up by 2026. टोटल कितना special purpose park will be developed by a special purpose vehicle which will be owned by the central and the state government in the PPP mode. Cabinet approves the minimum support price MSP for Carrefour for marketing season 2023. The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by the Honorable Prime Minister Narendra Modi has approved the increase in the minimum support price for all the mandatory Carrefour for marketing season 2023. Marketing minimum support price for Carrefour for marketing season 7 June 2023. The Cabinet Committee on Economic Affairs कैबिनेट कौन करता है MSP कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर MSP फॉर पैडी गवर्नमेंट फिक्स्ड एट रुपीज 2183 पर कुंटल. पैडी जो है 2183 कॉमन ग्रेड 2203, ज्वार हाइब्रिड 3225, बाजरा 2500, रागी 3846, मेज 22090, तूर अरहर 7000, मूंग 8500, उड़द 6900, ग्राउंडनट 6300, सनफ्लावर सीड 6700, सोयाबीन 4600, सोईसम 8600 इतना. ओके हाईएस्ट में MSP फॉर पैडी कॉमन है 2183. हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज जो सीसमम का है, सीसमम का कितना एब्सोल्यूट इंक्रीज की बात करें तो 7830 से सीधा 8635, 805 का इंक्रीज हुआ है. और 805 के बाद 803 का इंक्रीज हुआ है मूंग की दाल में. इन परसेंटेज टाइम हाईएस्ट हाइक फॉर मूंग, हाईएस्ट हाइक परसेंटेज की टर्म की बात करें देखो हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज में सीसम, परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो मूंग. इंक्रीज इन MSP फॉर खारीफ क्रॉप फॉर मार्केटिंग सीजन 2023 इज इन लाइन विद द यूनियन बजट 2018 अनाउंसमेंट फॉर फिक्सिंग द MSP एट रेट ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेटेड average cost of production. The expected margin to farmers over their cost of production is going to be highest in case of bajra 82% and followed by toor is 400 and soyabean and urad. For the rest of the crop the margin to farmers over the cost of production is estimated to be at least 50%. As per the third advance estimate for 2022 the total food grain production in the country is estimated at record third advance estimate 330.5 million tons which is higher by 14.9. food grain total food grain production in the country is estimated at a record of 330.5 million ton which is higher by 14.9 million ton as compared to the previous year. The year this is the highest increase in the last 5 years. Total food grain production in the country is estimated to be record 330.5 million ton, higher by 59 million ton. MSME for all rabi crop the wheat का इसका पर कुंटल 2275 है, बार्ली 1850 ग्राम 5440, लेंटिल 6425, रेपसीड मस्टर्ड 5650, 5800 सेफ्लावर. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 डॉक्टर एस चंद्रशेखर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलीज द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स study by the Department of Science and Technology and the United Nations Industrial Development Organization.
Department of Science and Technology, United Nations Industrial Development Organization to evaluate the innovation performance of manufacturing. Innovation performance किसकी? Innovation performance of manufacturing firms in India. The innovation performance manufacturing for the National Manufacturing Innovation Index. National Manufacturing Innovation Index is computed using 3 main dimensions which have been considered using 9 plus built innovation enablers, absence of innovation barrier. इनोवेशन इनेबलर्स होने चाहिए, इनोवेशन बैरियर्स खत्म होने चाहिए, इनोवेशन परफॉर्मेंस बढ़िया, मेजर थ्रू द इनोवेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म एज वेल एज इनोवेशन आउटपुट. Innovation objective, innovation output and outcome achieved during the observation period. National NMI, National Manufacturing Innovation Index. The state of Karnataka ranked highest on National Manufacturing Innovation Index and the lowest. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग में कर्नाटका हाईएस्ट था और लोवेस्ट वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सक्लूडिंग असम. कर्नाटका क्लोजली फॉलोड बाय. कर्नाटका में बहुत अच्छा वो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स. दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, तेलंगाना एंड तमिलनाडु. लो स्कोरिंग आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम को छोड़ के, जैसे कि सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. फिर बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. फर्म लेवल इनोवेशन 25% of the 8074 firms surveyed were considered innovative. Telangana, Karnataka and Tamil Nadu had the highest share of innovative firms. 46% का तेलंगाना, 39% कर्नाटका and Tamil Nadu 31%. उड़ीसा, बिहार, झारखंड recorded the least share of innovative firm. 12 उड़ीसा में, फिर बिहार के बाद झारखंड में. इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन पब्लिश इन 26 फरवरी 2023 जो इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस. 16 इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन. कर्नाटका एंड गुजरात मेड द मोस्ट प्रोग्रेस टुवर्ड द क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन. हरियाणा एंड पंजाब आर द बेस्ट पोजीशन टू फर्दर दिस ट्रांजिशन. कर्नाटका, गुजरात आर द मोस्ट प्रोग्रेस टुवर्ड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, electricity transition. Haryana and Punjab best position to further this transition. Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal must ramp up effort to maximize their renewable energy potential and increase the clean electricity, renewable energy generation potential. Clean energy transition commitment. QS World University Ranking 2023 by subject. In March 2023, QS World University Ranking subject was released. QS World University Ranking by subject 2023 covered a total of 54 disciplines grouped into 5 blocks. This year ranking include 3 new subjects जैसे कि data science हो गए, history of art and marketing, global performance. मैसेज सबसे global performance MIT of US is ranked first, followed by the University of Cambridge of UK and Stanford of US. तो US की दो हैं, एक MIT फर्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे स्टैनफोर्ड है, सेकंड नंबर पे कैम्ब्रिज ऑफ यूके है. आईटी मद्रास इन पेट्रोलियम एनर्जी 21 है. आईटी बॉम्बे जो है वो मैथमेटिक्स में 92. आईटी दिल्ली जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो सोशियोलॉजी में. JNU रैंक 68. अपार्ट फ्रॉम दीज 10 एंट्रीज फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड 2 बिट्स पिलानी और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी टॉप 100 में आए हैं. न्यूज़ इन शॉर्ट्स है ये, इसको आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक में कन्वर्ट. ओके, न्यूज़ इन शॉर्ट कर लेते हैं. फर्स्ट 6 लेन स्टील स्लैग बेस्ड रोड. इंडिया की पहली 6 लेन की स्टील स्लैग बेस्ड रोड कनेक्टिंग NH6 to Hazira Port was connected in Medina at Surat. Steel slag is generated as a solid waste during the steel production. For every 8 ton of steel production, around 1 टन वो करोगे तो 180 से 200 किलो स्टील स्लैग आएगा. अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रोलिंग. द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश Sheikh Hasina has been organizing around the 3 Indian assisted development projects. The 3 projects are Akhora Agartala rail link and Akhora Agartala cross border rail link है. खुलना मोंगला पोर्ट है. खुलना मोंगला पोर्ट यूनिट एंड यूनिट 2 ऑफ द मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट. द अखौरा अगरतला ऑफ क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट हैज बीन स्केड्यूल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट स्टेट ऑफ 392 crore extended in Bangladesh. The length of the rail link is 12.24 km with a 6.8 km dual gauge rail lane in Bangladesh and 5.3 in त्रिपुरा में है. द खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेस लाइन ऑफ क्रेडिट. इसमें 388 करोड़ दिया. प्रोजेक्ट कंट्रोल द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओनली 65 किलोमीटर्स में 12.24 ब्रॉड गॉज रेल रूट बिटवीन मोंगला पोर्ट एंड एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क इन खुलना. The project has been implemented by the Bangladesh Indian Friendship Power Company. Bangladesh India Friendship Power Company Limited 50-50 joint venture company between the India NTPC and Bangladesh का Power Development Board. Unit 2 of the Matthew Pathamar plant was inaugurated jointly by the Prime Minister Siberian Tiger after 12 years to 1.5 years old. After 1.5 year old Siberian Tiger named Lara and Akamas 2.5 year. एक साल का एक हाफ ईयर का साइबेरियन टाइगर है
जिनका नाम है लारा कॉमर्स अराइव्ड एट Padmaja Naidu's Marine Zoological Park, Darjeeling, West Bengal, from Pifu Zoo in Cyprus in exchange for the 2 red panda from Darjeeling. दार्जिलिंग जू के 2 रेड पांडा पिफॉस जू इन सिप्रस में गए हैं और वहाँ से 2 साइबेरियन टाइगर जिनका नाम है लारा और अकामा वो पद्माजा नायडू हमारे में है. सर्कुलर रेल नेटवर्क इन नवंबर 2023 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे has proposed to develop a circular rail network around 287 km in the outskirts of Bengaluru. India's fastest solar electric board Barracuda said to be the India's fastest solar electric board launched at the yard of Nevalt Solar Electric Board located off Arur in Kerala में Alappuzha में Arur. Named after the swift long-faced Barracuda was designed by the Nevalt and can be deployed even in rough seas as a workboat to ferry up to 12 passengers and cargo. And 14 meter लंबी है, 4.4 meter wide and can attain a top speed of 5 knot and has a range of 7 hours on a single charge. The first high-tech sport training center for Divyangjan. The Prime Minister Narendra Modi launched the country का पहला high-tech sport training center for Divyang under the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in Gwalior, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh gets India's largest tiger reserve in Bhamu. The union government has issued a ruling regarding the approval of the proposal to merge the Nora Dehi Wildlife Sanctuary located in the central Madhya Pradesh, covering a part of Sagar, Dhamu, Narsinghpur and Raisen district with the Rani Durgavati Wildlife Sanctuary in Dhamu district of the state. It will be a vast tiger reserve spanning 2300 किलोमीटर के द 7th स्टेट का 7वां टाइगर रिजर्व. वैक्स स्टैचू ऑफ बाबा साहेब इनके जिसमें 2000 वैक्स स्टैचू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्ट रत्न बाबा साहेब मानकर वॉज इंस्टॉल्ड इन जयपुर वैक्स म्यूजियम नहरगढ़ फोर्ट राजस्थान में कौन से फोर्ट नहरगढ़ फोर्ट वहाँ पे जयपुर वहाँ पर भी द हाइट ऑफ द स्टैचू इज 5 फीट 11 इंच वाइल द वेट इज अबाउट 38 किलो. Okay. Payment Infrastructure Development Board (RBI) has decided to extend the Payment Infrastructure Development Board for 2 years. The scheme was launched in 2021 for a period of 3 years. The Payment Infrastructure Development Board scheme was set up to encourage the development of payment acceptance infrastructure such as the physical point of sale terminal, quick response code in the Tier 3 and Tier 2, Tier 6 northeastern state and UTs of Jammu and Kashmir, Ladakh. National Transit Pass System. Recently, Union Minister for the Environment, Foreign Climate Change and Labour and Employment, Trustee Bhupendra Yadav launched the National Transit Pass System pan-India to facilitate the seamless transit of timber, bamboo and other forest produce across the country. Currently, the transit system permits are issued for the transport of timber and forest produce based on the specific transit route. The National Transit Pass System as a one nation, one pass design which will enable a seamless transit across the country. The Deen Dayal Antyodaya National Rural Livelihood Mission and SIDBI links a MOU to boost the women-led enterprise on the Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission and under the Ministry of Rural Development and the SIDBI signed a historic memorandum of understanding that makes a significant milestone in the journey of women-led enterprises in India. Deen Dayal Antyodaya National Rural Livelihood Mission and SIDBI कौन सी इंटरमयूतना. Okay, मेरा बिल मेरा अधिकार. Recently, the government of India is changing the state government has launched an invoice incentive scheme बताने मेरा बिल मेरा अधिकार to encourage the of customer asking for invoice of bills. 1 सितंबर 2023 government of India in association with the state government. The objective of the scheme is to bring the cultural change and the behavioral change in the general public and ask for fully as their right and entitlement. India's first 3D printed post office. Union Minister for Railway and Communication, Electronics and IT Ashwini Vaishnaw dedicated to the nation. India का पहला 3D printed post office कहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटका में अश्विन जी आए थे. Recently, National Digital Nagrik Forum. Recently, the Confederation of All India Traders has announced the creation of National Digital Nagrik Forum. And the All India Traders, the Confederation of All India Traders, National Digital Nagrik Forum aims to raise awareness about the digital regulation and help build the capacity of citizens to engage with innovation via expert sessions and instructional material. Expert session and instructional material. World Bank Global Economic Prospect. The World Bank said in the latest Global Economic Prospect report that global growth is likely to slow 2.1%. It lowers India's growth rate to 6.3%, a 0.3% point downward revision. In emerging market developing economy, excluding China, growth is projected to fall to 2.9% in 2023 from पहले 4.1% था 2000. Growth in India is expected to slow further to growth in India 6.3% and a 0.3 percentage point downward revision. इंडिया की पहले इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड एयरटेल विल मैन्युफैक्चर इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड फ्रॉम RPVC recycled polyvinyl chloride material which is claimed to be eco friendly as per the bank, and at every batch of 50,000 cards produced would reduce the carbon emission by 350 kg compared to conventional PVC cards in the market. Rights India Limited and Aircon granted on 12 October 2023 Ministry of Finance
hence conferred Navratna status to the IRCON International and Rights Limited Board Central Public Sector Intervention Navratna. IRCON और राइट नौ रत्न है. IRCON और राइट में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज IRCON and Rights Limited become the 15th and the 16th. IRCON बना 15th, RIGHT बना 16th. RBI Udgam portal, even the RBI of India has launched the centralized web portal Udgam Unclaimed Deposit Gateway. Unclaimed Deposit Gateway to access information. Udgam Unclaimed Deposit Gateway to access information for individual to such deposit deposit across multiple banks in one plane. T+1 settlement point. India will become the second country after China in the world to start the trade plus one settlement cycle in top listed securities launch. इंडिया और चाइना 27 जनवरी 2023 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट विद इन 24 आवर. T+1 settlement cycle means the trade related settlement must be done within a 24 hours after the completion of transaction. All India Limited elevated as the 13th Maharatna company in August 2023. Ministry of Finance has elevated All India Limited and ONGC Videsh Limited to Maharatna and Navratna status. देखो All India Limited जो है ऑल इंडिया लिमिटेड टू महारत्न ONGC नवरत्न ऑफ द सेंट्रल पब्लिक रिस्पेक्टिवली. तो ऑयल इंडिया जो है वो महारत्न है, MO है, और ONG विदेश एंड नवरत्न कैटेगरी by the central public. These new status will help the company take decisions on large investment on their own and both within and about. Kirti Parikh panel for the gas pricing. Kirti Parikh panel to review the natural gas prices in India has recommended the price band of ₹4 से 6.5 per unit for gas from old legacy field, which account for over 70% of the domestic output and ensuring a fully market determined in rate. The committee market determined rate. The committee was set up in September 2022 to review the gas pricing formula. Thank you so much.